only, na? Okay. Good afternoon, all. Good afternoon, sir. Yeah. So in the last class, we discussed how to integrate different type of functions. Now we'll discuss, suppose if it is not in direct form of integration, then how we'll find out the value of this dy by dx. Okay. So, or integrate a particular function. Suppose if it is given that, let's say integration of, assume that 2x plus 3 or 2x plus 3 the whole square into dx. And our aim is to like find out the integration of this particular term. So over here, if it is only 2x plus 3 dx, then we know how to find out the value of integration. But if it is 2x plus 3 raised to 2, then we don't know how to find out the value of integration of this term. So it is same as like in case of differentiation, function in function aa raha tha. So same as like that over here, if it is like 2x plus 3 raised to 2, we cannot directly apply an equation over here. So we'll go for a method known as the method integration by substitution. So we'll discuss about that method over here. So around the heading integration by substitution. So integration by substitution means like we are using this when integrand means हमने कौन सा part को integration कर रहा है. When integrand is not in direct form of integration, मतलब x raised to n और sin x cos x ये सब का term में नहीं है, then a part of it is substituted by a new variable to transform the integrand into the direct form of integration. Then direct results of integration can be used. So first we can write the theory part, then we'll discuss what it is. So down when integrand is not in direct form of integration, then a part of it is substituted. A part of it is substituted by a new variable. To transform the integrand into the direct form
into the direct form, then the results of direct integration can be used. So we'll discuss what it is. हमने क्या लिखा है. Like we took an example of integration of 2x plus 3 the whole square into dx. And our aim is to integrate this particular function. So over here, it is not in the direct form of integration. So that's what we are writing over here. So when integrand is not in direct form of integration, then a part of it is substituted by a new variable. So over here, this part, that is 2x plus 3, we'll consider it as a new variable, let's say t, same as like हमने differentiation में किया था, like that. Okay. Then the direct result हम लोग directly use कर सकते हैं. So what we'll write is, it is integration of nothing but t square. Instead of t, we took it as 2x plus 3, t square dx. Over here, can you scroll up? Yeah. Over here, the value of t is taken as nothing but 2x plus 3. तो समझ में आया क्या किया है? Any doubt on this part? Can you explain again? No, sir, no doubt. Okay. So it was not in direct form of integration. So instead of this 2x plus 3, we should assume that another variable, take it as t. So if you are writing 2x plus 3 as something but t, so it becomes integration of t square into the dx. We are writing it over here. So t square dx is, or where the value of t is something but 2x plus 3. Okay. Now, is it possible to integrate this term? Yes, sir. Yes. Yes, 2t. sir. No. Sir, it will We be cannot t cube upon 3. cube by 3. 1 minute. We cannot integrate this term because इधर क्या है dx है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होना चाहिए, उधर dt होना चाहिए. ठीक है. If it is integration of x square dx, so we can write the answer is something but x raised to 3 divided by 3, no doubt. If it is integration of t square dt, then we can write the answer is something but t cube divided by 3. But if it is integration of t square dx, which is not possible, we cannot integrate t with respect to x. Got it? Okay. t integration करना है तो dt का term होना चाहिए. Okay? So we cannot directly integrate this. So अगर इसको integration करना है तो we record the term of dt over there. dt, yes, sir. So our aim is to integrate this t square dx, and for integration of this we record the term that is dt over here. So from this equation, there is t is equal to 2x plus 3. What we'll do is dt का term मिलने के लिए ये जो equation है उसको differentiation कर दो. So t का differentiation होगा, that is dt is equal to 2 into dx का integration हो गया dx and 3 का 0. So we got the value of dt in terms of dx in terms of dt मिल जाएगा. We can write this dx is equal to nothing but dt divided by 2, right? Now we can put this value over here. So integration of t square, instead of dx, we can write it is dt divided by 2. Now it is in direct form of integration. Now we can integrate this. तभी इसका integration बोलो क्या आएगा? t cube upon 6. To t cube by 6. So 1 by 2 is a constant. We can write as it is. And t square का integration, you can write t cube divided by 3 plus constant of integration c. So we can write becomes t cube divided by 6 plus constant of integration c. Where the value of t क्या था? t का value 2x plus 3 था. So you can write the final answer is 2x plus 3 divided by 6 plus constant of integration c. So this will be the final answer. Got it? 2x plus 3 क्यूब को आगे सॉल्व नहीं करने का है ना? नहीं. अब इसको 2x plus 3 raised to 3 का फॉर्म में लिख सकता है. So can you scroll up? I need to write a definition of integration by subtraction. Subtraction नहीं, substitution. Substitution, sorry. Yeah. एक मिनट. आप लोग लिख दो.
तो सर इन द बिगिनिंग हमने जब t is equal to 2x plus 3 लिया था, so in the final step we need to substitute that value, right? यस यस यस, Okay sir. बिकॉज ऑप्शन में टी का टर्म नहीं लेगा ना, टी तो हमने कैलकुलेशन मतलब इंटीग्रेशन करने के लिए वी अज्यूम दैट टर्म टी ओवर देयर। और सर वन मोर डाउट, ये जो 2x plus 3 द होल क्यूब है, इसको हम नो a नीड टू plus b द एक्सपेंड, होल क्यूब में नहीं या कर करके सकते? एक्सपेंड कर सकता है, बट नो नीड। ओके सर. Sir, can you explain again because I Yeah, joined yeah. 2 minutes later. Why you joined 2 minutes later? Sir, actually it was connectivity issue. Yeah, I'll explain. So over here, if integration is not in direct form, means अगर x raised to n का form में नहीं है और जो भी हमने equation लिखा है उसका direct form में नहीं है, then how we'll integrate? Then we'll use a method which is known as about integration by substitution, in which we are writing when integrand is not in direct form of integration, then a part of it is substituted by a new variable. So a part of it will consider as about a new variable t, and then we'll integrate with respect to that. So Rm was to integrate a term which is nothing but integration of 2x plus 3 raised to 2 dx. इसको integration करना था. So it is not in the form of direct x square or something. So what we'll do is we'll write this one is equal to इसका जो internal function है, that is 2x plus 3, उसको हमने एक t consider करेगा. So we'll take a t is equal to 2x plus 3. So we can modify this equation as something but t square into dx. But we cannot integrate t with respect to dx. t को integration करना है तो dt का term होना चाहिए. For that purpose, we are differentiating this equation. So we'll get dt is equal to nothing but 2 dx. Or you can write this dx is equal to nothing but dt divided by 2. Now we can put this value over here instead of this dx. So So it how becomes dt equals to 2 dx? dt is equal to, हमने इसको इंटीग्रेशन किया ना बेटा, सॉरी डिफरेंशिएशन किया ना, t का डिफरेंशिएशन क्या है, dt है, हाँ 2 कांस्टेंट है उसका एज इट इज लिखा है, x का इंटीग्रेशन dx है, 3 का 0 है ना, so we can write dx is dt by 2, so it becomes integration of t square into dt divided by 2. Now we are integrating t with respect to dt, तो हम लोग कर सकता है. So 1 by 2 is a constant, t raised to 2 plus 1, that is t raised to 3 divided by 3 plus constant of integration c. So we can write it will be equal to t raised to 3 divided by 6 plus constant of integration c. Now we can substitute that term related to 3, that is 2x plus 3 raised to 3 divided by 6 plus c. This will be the final answer. तो सर पहले पार्ट बोलो. में आपने डिफरेंशिएशन किया था, करेक्ट? हमको dx का टर्म चाहिए था इसलिए डिफरेंशिएशन किया है. yes. ओके सर. So we'll take another example. Let's say if it is given that y is equal to nothing but sine 3, sorry, not y, look integration. So integration of, our aim is to find out integration of sine 3x dx. Try to find out the answer. Integration of sine 3x dx. तो हमने कौन सा टर्म को t कंसीडर करना है? 3x, yeah. So 3x को t assume करके try to find out the answer. So is the answer cos
cos 3x upon 3. Yes, yes. सबको मिला आंसर? So what we'll do is we'll write this t is equal to nothing but 3x, and integration of sine t, instead of 3x we are writing t, so sine t dx, but we cannot integrate t with respect to dx, तो dx का term को dt का term में replace करना है. So we'll differentiate this function, so dt becomes equal to nothing but 3dx, so the value of dx will be equal to dt divided by 3. So we can put this value over here. It becomes integration of sine t into dx can be written as something but dt divided by 3. So it becomes equal to 1 by 3 is a constant. We can take it as it is. Integration of sine t. Integration of sine t is, what is integration of sine t? minus cos. Minus cos t. तो cos t नहीं है, याद रखना है, minus cos t plus constant of integration c. So you can write the final answer is minus 1 by 3 into cos of t. T is 3x plus constant of integration c. तो माइनस साइन आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x है, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस cos x dx. So we will add plus 1 to the denominator, right? We have to add plus 1 to the denominator, right? add plus 1. Why? Power like n plus 1. नो हमने कौन सा टर्म को इंटीग्रेशन किया है? cos t का इंटीग्रेशन किया ना, cos x का इंटीग्रेशन, सॉरी sin x का इंटीग्रेशन किया ना. sin x का इंटीग्रेशन क्या है? cos x. sin t dt का इंटीग्रेशन इज cos t. इफ इट इज algebraic फंक्शन तभी तो करेगा ना, x raised to n का फॉर्म में है तभी x raised to n plus 1 by n plus 1, मतलब sin को sin raised to 1 plus 1 sin square ऐसा नहीं लिखेगा, ठीक है? अगर स्क्वायर होगा तो लिखते हैं हम लोग, वो भी ओके भी लेता हूँ तो आपको आइडिया मिलेगा. I can take another example. Let's say this integration of a raised to, yeah, you can take it as integration of 5 raised to 2x plus 5 into dx. Find out the value of this. So is the answer 5x square upon 4? 5x square, no, 5x square. Yes, sir. Sorry, sir. 5 square upon 4. No. Sorry. a raised to x का फॉर्म है. a raised to x का इंटीग्रेशन क्या हाँ होता है? a raised to x divided A by raised to ln x is ln of divided by x. ln of a, yeah. Sir, 5 by 2 raised to 2 dx. 5 by 2 raised to 2. 2. Sir, 5 raised to 2x plus 5 upon 2 log ln of 5. Yes. So we can write it like this. It is 2x plus 5. We can take it as nothing but t. So the equation becomes integration of 5 raised to t into dx.
but we cannot integrate t with respect to dx. So dx को dt का term में convert करना. So 2 dx is equal to nothing but dt. So we can write dx is equal to dt divided by 2. So we can write this integration of 5 raised to t dx can be written as dt divided by 2. Now we can integrate t with respect to dt. That is 1 by 2 into, it is in the form of a raised to x dx. A raised to x का integration होता है nothing but a raised to x divided by ln of a plus constant of integration c. So you can write the final answer is 1 by 2 into a raised to t. T is nothing but 2x plus 5 divided by ln of a plus constant of integration c. Got it? A नहीं है, a Or it should be 5. So it should be 5. Yes, sir. 5 raised to t. Okay. And so down also, na ln of 5 it should be. ln of 5. ln of 5. So can you give more example related to Yeah, this only, like this yeah, one? I'll take some more questions. Let's say if it is given that integration of tan x dx. Integration of tan x dx. So over here we know that sin x का integration तो है, cos x का भी integration है, but tan x का direct integration नहीं है. Integration of sin x is cos x, integration of minus cos x, and integration of cos x is sin x. सर tan को sin by cos केस में कन्वर्ट Yeah. कर सकते हैं ना? Yes, yes. So we have to write first this tan is equal to sin x divided by cos x into dx. Now अभी देखो इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ प्रोडक्ट रूल, डिविजन रूल ऐसा कुछ नहीं है. ओके, तो आगे हम लोग कैसे करेगा? एक ही मेथड है which is nothing but integration by substitution. So अब देखना है कौन सा टर्म को अभी इधर सब्स्टिट्यूशन करना है. सर sin x को cos sin x x को cos x में कन्वर्ट कर सकते हाँ सर. sin x को cos x में कैसे कन्वर्ट कर सकता है? हैं minus cos x क्या क्या? हैं? sin x equals to minus cos. नहीं. तो over here we are having two. है ना? No, डायरेक्टली हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? सर किसी एक को t ले लेते ना. Yeah. हाँ. So there are two possibilities. Either you should take sin x is equal to t, मतलब दो वैल्यू है ना, तो sin x को t ले सकता है या cos x को t ले सकता है. तो देखना है कौन सा सब्स्टिट्यूशन सही है, मतलब sin x को t लेना है कि cos x को t लेना है. तभी हमको पता नहीं है कौन सा टर्म को t लेना है. अगर मान लो आपने sin x को t लिया है, तो how will write this equation? Integration of sin x को t कर दिया divided by cos x into dx. Is it possible to integrate this? No, sir. No. No. एक x का टर्म है और एक t का टर्म है, ठीक है? तभी क्या करना पड़ेगा, जो dx है उसको dt का टर्म में कन्वर्ट करना dt पड़ेगा. का टर्म. तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएशन किया. मतलब आर इक्वेशन वाज नथिंग बट sin x को हमने t कंसीडर किया था. तो जस्ट डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन. sin x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? cos x dx is equal to nothing but dt आएगा. So we can write the value of dx will be equal to dt divided by cos x. Now we can put this value over here. So this can be converted in the form of t divided by cos x into dx is nothing but dt divided by cos x. So is it possible to integrate this function? Yes, इसको sir. इंटीग्रेशन कर सकते? No, we cannot integrate sir. because इधर t का टर्म है, dt का टर्म है, बट इधर क्या x का टर्म है, तो हमको दो वेरिएबल हो गया. एक्चुअली इंटीग्रेशन करना है तो t का टर्म होना चाहिए और dt का टर्म होना चाहिए. अगर अदरवाइज x का टर्म होना चाहिए, dx का टर्म होना चाहिए. So basically we will not be able to integrate this. Okay? अभी आप देखते हैं सेकंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सही आता है कि नहीं.
तो हमने इधर क्या कंसिडर किया, cos x को t कंसिडर किया है. So we will write the equation something like this. It is integration of sin x by cos x था, so we can write integration of sin x dx divided by, instead of cos x we can write as nothing but t. t. तो इसको भी हमने इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, तो we'll try to replace that term dx by dt. So our relation was cos x is equal to nothing but t. If you are differentiating cos x, we'll get as it is minus sin x dx is equal to dt. So dx can be written as nothing but minus dt divided by sin x. That's okay. Now we'll replace this term. So what we'll get is integration of sin x dx, sin x into dx can be written as nothing but minus dt dt upon sin x. Minus divided dt by upon sin x. Yes. sin x divided by t. So So sin क्या x हो गया? is This sin x and this sin x get cancelled. So we can write this in the form of integration of minus of 1 by t dt. इसको इंटीग्रेशन तो कर सकता है, t और dt का टर्म है. Yes, What sir. is integration of 1 by t dt? ln of t. ln of t. ln So of what is t. the answer? Minus of ln of t. Now what is the value of t? t का वैल्यू हमने क्या assume किया था? cos x किया था. Cos x. So the final answer is ln of cos x plus constant of integration c. So can you explain how ln of t came, that minus ln of t? माइनस साइन तो ऑलरेडी बाहर था. 1 by हाँ. x dx का इंटीग्रेशन क्या ln x है ना? अच्छा हाँ, 1 by x dx. Okay, sir. So over here ये तो बहुत जरूरी है कि हमको फाइंड आउट करना चाहिए कौन सा टर्म को इंटीग्रेशन करना है. सो विल डिस्कस, सॉरी कौन सा टर्म को सब्स्टिट्यूशन करना है. सो विल डिस्कस हमको कैसे पता चलेगा कौन सा टर्म को सब्स्टिट्यूशन करना है. सर क्वेश्चन वाज इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. So first we wrote it as nothing but sin x can be written as, sorry, tan x can be written as sin x divided by cos x into dx. Now we are, if you are having any confusion that whether we should take sin x as nothing but t or cos x as nothing but t, so अब इसको ऐसा देखना है, अगर हमने कौन सा टर्म को सब्स्टिट्यूशन कर रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन में बाकी टर्म आना चाहिए. ठीक है, दैट मीन्स अगर आप ऐसा सोचा कि मैंने sin x को t लेंगे, तो sin x को अगर आप डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या मिलेगा आंसर? sin x cos t मिलेगा. cos x dx मिलेगा. हाँ, cos x dx. तो बट अभी आप देखना है जो कौन सा टर्म को सब्स्टिट्यूशन करने वाला है उसको छोड़ के बाकी जो टर्म है वो मिलना चाहिए अगर हमने वो सब्स्टिट्यूटेड पार्ट को डिफरेंशिएशन करे तो. So इसमें That मिल रहा है means- cos x dx. नहीं, sin x को डिफरेंशिएशन करे तो क्या मिलेगा? cos x dx मिलेगा. बट टर्म क्या है? dx by cos x है ना. हाँ. समझ में बात? sin x को छोड़ के बाकी टर्म क्या है? dx by cos x है. हाँ. बट अगर आप sin x को डिफरेंशिएशन करेगा तो आपको dx by cos x तो नहीं मिलेगा. क्या मिलेगा? cos x तो dx मिलेगा ना. हाँ, उल्टा मिल जाएगा मतलब. या तो बट अगर देखो, अगर आप उल्टा देखो, अगर हमने क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx डिवाइडेड बाय cos x. सपोज इफ यू आर टेकिंग cos x एज t, तब cos x को t मान लो, तो cos x को डिफरेंशिएशन करेगा तो क्या मिलेगा? cos x को सर तो माइनस sin x मिलेगा. माइनस sin x dx मिलेगा. तो मतलब बाकी जो टर्म है sin x dx तो है, उसमें मिल जाएगा. समझ बात? तो विच इज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन? विच इज द करेक्ट सब्स्टिट्यूशन? सेकंड वाला cos x या वाला. cos x को t मानना है. ठीक है, तो आप देखना है कौन सा टर्म को आप कंसिडर डिफरेंशिएशन करें तो इक्वेशन में बाकी जो टर्म दिया है वो आ जाएगा. ठीक है, तो हम लोग इसका थियरी भी लिखेंगे. ठीक है, तो डाउन when integrand is not in direct form of integration, तो तभी हमने सब्स्टिट्यूशन यूज करता है. So you can write when integrand is not in direct form of integration, direct form, then for substitution we choose
that part of integrand, we choose that part of integrand, such that the remaining part of integrand, will be consumed by the differentiation of substituted part, got it? So how did So that हमने become ऐसे बोला, ln of a? yeah, that we'll discuss. Yeah. तो जब इंटीग्रेंड डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, देन सब्स्टिट्यूशन में आप ऐसा टर्म को देखना है ताकि उसको डिफरेंशिएशन करें तो रिमेनिंग टर्म्स आएगा. तो लाइक over here we are having two possibilities, either he can take sin x as t, but sin x को इंटीग्रेशन करेगा तो डिफरेंशिएशन करेगा तो आपको cos x dx मिलेगा, बट बाकी जो टर्म है वो dx by cos x है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है. बट cos x को आप लेगा तो cos x का डिफरेंशिएशन में माइनस a sin x dx आएगा, तो cos x dx को आप t सब्स्टिट्यूशन करना है. सो वंस अगेन विल बोलो सर इसका मतलब कि मतलब अगर वो माइनस के फॉर्म में आएगा तो चलेगा क्या? माइनस चलेगा, बट बाकी जो टर्म है वो वेरिएबल नहीं होना चाहिए. अच्छा, मतलब हम लोग पूरा जो x का टर्म को t का टर्म में कन्वर्ट करना चाहिए, x का टर्म वापस नहीं आना चाहिए. ओके, बिकॉज ओनली t dt का टर्म है तो चलेगा, बट x का टर्म नहीं होना चाहिए. कांस्टेंट तो चलेगा, माइनस कांस्टेंट -1 -2 इंफिनिटी या 10 20 जो भी वैल्यू चले, कांस्टेंट वैल्यू चलेगा, बट x का टर्म उसके अंदर पूरा निकलना चाहिए. ओनली t dt का टर्म होना चाहिए. Got it. We'll take some more example तो पता चलेगा. So once again we'll explain that question. If it is integration of tan x dx, तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता है, तो we'll write it is integration of sin x divided by cos x into dx. उसके बाद आप देखिएगा कि या ये जो cos x को अगर मैंने t लेगा तो cos x का इंटीग्रेशन होगा minus sin x dx is equal to dt. So we can observe that instead of the sin x dx हम लोग dt by minus dt लिख सकता है. तो क्या करेगा ये क्वेश्चन में, instead of sin x dx we'll write minus dt and instead of cos x we'll write t. से डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन में आ गया. इसमें ओनली t और dt का टर्म है, dx का टर्म नहीं आ रहा. सो -1 को आप कांस्टेंट ले सकता है. इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx is nothing but ln of x. So instead of 1 by t dt, it is ln of t plus constant of integration c. Now we can put the value of this t over here. t का value क्या लेगा? cos x लेगा plus constant of integration c. So this will be the final answer. okay. Sir, done. Sir, give some more examples now. Yeah. ये लिख दो. Done, sir. Yeah. सबको लिखना. सर एक मिनट. Yeah. Okay, so we'll take another example. Let's say if it is integration of ln x divided by x into dx. Try to find out the value. तो अब देखना है कौन सा टर्म को t लेना है, ln x को t लेना है या x को t लेना है. तो कैसे पता चलेगा? देखना है कि ln x को डिफरेंशिएशन करे तो बाकी टर्म आएगा कि x को डिफरेंशिएशन करे तो बाकी टर्म आएगा. So, Bolo, what is the correct substitution in this case? ln of x.
ln सर of x, ln of x क्योंकि उसका 1/x आएगा. वहाँ 1/x dx आएगा. तो बाकी टर्म पूरा आप dt का टर्म में लिख सकता है. तो फाइंड आउट द आंसर. क्या मिला आंसर? Sir, I am getting a very different answer. आंसर तो बोलो. Sir, it is ln of ln x, ln of ln x plus c. बाय ln of x Sir, into ln of ln x by ln x. क्या ln by सर? ln x नहीं है. नहीं. So पहले क्या करना पड़ेगा? You just take ln of x is equal to nothing but t, because ln x को डिफरेंशिएशन करेगा तो बाकी टर्म आएगा 1/x dx आएगा. Okay, so we can write 1/x dx is equal to nothing but dt. तो बाकी जो टर्म है उसको आप dt लिख सकता है. So it becomes ln of t. ln of t को हमने क्या कंसीडर किया? t कंसीडर किया. That is in the form of t and dx by x क्या हो गया? dt हो गया. That's a form of integration of t dt. So integration of t dt क्या होता है? t square by 2 plus c. अभी t का वैल्यू वापस पुट कर दो. t का वैल्यू हमने क्या लिया? ln of x लिया है. तो it is ln of x का स्क्वायर by 2 plus constant of integration c. Got it? Yes. Is it clear? या doubt है? t स्क्वायर कैसे No. आया? बेटा it is in the form of x raised to n dx है ना. n का वैल्यू 1 है ना. Normal algebraic function. t raised to 1 plus 1 by 1 plus 1. Got it? Okay, sir. Understood now. Yeah. Sir, please give one more example. Yeah. We will try. Let's say another question, if it is given that integration of 2x plus 3 divided by x square plus 3x plus 5 into dx. So we will integrate up पहले up देखना है one. कौन सा टर्म को सब्स्टिट्यूशन तो कौन सा टर्म को t लेना है. Denominator. सर फर्स्ट Yeah. वाले को d 2x plus 3 को नहीं 2x plus 3 को आपने अगर t लेगा तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2dx होगा. तो बाकी जो टर्म है पूरा नहीं आएगा ना. अच्छा हाँ. बट आप डिनोमिनेटर को देखो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x प्लस उसका जो टर्म है वो 2x प्लस 3 इंटू डी एक्स आ जाएगा. हाँ सर. तो डिनोमिनेटर का जो टर्म है उसको t मान लो. तो अब ऐसे देखना है कौन सा टर्म को डिफरेंशिएशन करे तो बाकी टर्म आ जाएगा.
ln of x square plus 3x plus 5. ln of X square plus 3x plus 5. yeah plus constant of integration c. So over here we can take t is equal to nothing but x square plus 3x plus 5. So dt becomes equal to 2x plus 3 into dx. So instead of this term 2x plus 3 into dx, we can take that is equal to dt, and instead of x square plus 3x plus 5 we can write t. So now it is in the form of integration of 1 by t dt. Integration of 1 by t dt is nothing but ln of t plus constant of integration c. So we can write this nothing but ln of t is nothing but x square plus 3x plus 5 plus constant of integration c. Got it? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Got it. So this one is a way we'll find out the value of integration if it is not in direct form of integration. Now on the next part, we'll discuss about definite integration. So हमने पहले बोला था there are two type of integration. One is indefinite integration and another one is something but a definite integration. So we'll discuss about this. What do you mean by definite integration and how we'll do it? Okay. So in case of definite integration, we are going to get a specific value instead of in case of indefinite integration, we are writing that constant of integration c. So physically ये जो definite integration है और indefinite integration उसमें difference क्या होता है? Assume that we are having a term something like x, or let's say x was something like 100, okay? And if you are dividing, or मान लो distance from A to B is something like 100 centimeter, and we are dividing this A to B into let's say 100 equal parts. So this division process, this splitting process is known as something but a differentiation. So let's say if you are dividing this one into 100 equal parts, then we can say that each part will have a value of 1 centimeter. 1 centimeter. Right? Now, in case of definite integration, in case of indefinite integration, we are saying that if you are adding 1 centimeter, तो हमको 100 मिलेगा. तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग है 100 को डिवाइड करेगा तो 1 मिलेगा 100 इक्वल पार्ट्स में, और आप पूरा 1 को ऐड करेगा तो 100 मिलेगा. बट इन केस ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कहाँ से कहाँ तक उसको ऐड करना है. हम लोग x का टर्म में लिखता है, वेरिएबल का टर्म में लिखता है. बट इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग स्पेसिफाई करेगा कहाँ से कहाँ तक ax को ऐड करना है या dx को ऐड करना है. ठीक है, मतलब x अगर 100 है तो मान लो dx इज लाइक 1. तो in case of indefinite integration, we'll write just integration of dx, मतलब dx पार्ट को आप ऐड करो तो x मिलेगा. बट हम लोग ये स्पेसिफाई नहीं करता है कहाँ से कहाँ तक ऐड करना है. बट अगर आप ऐसा सोचो, ऐसा स्पेसिफाई किया है, they're asking to add or it this one from 0 to 10, 0 से लेके आप 10 तक ऐड कर दो, मतलब 10 पार्ट को ऐड कर दो, तो क्या मिलेगा आंसर? 10 सेंटीमीटर मिलेगा. अगर ऐसा स्पेसिफाई किया है आप 0 से लेके 20 तक ऐड कर दो तो विल गेट द आंसर एज 20. तो इधर क्या करेगा? स्पेसिफिक लिमिट मतलब स्पेसिफाई करेगा. और ऐसा भी आप बोल सकता है आप 10 से लेके 20 तक ऐड कर दो तो क्या मिलेगा आंसर? 10. गॉट इट? तो इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन इसमें लिमिट स्पेसिफाई करेगा कहाँ से कहाँ तक वो फंक्शन को ऐड करना है. सो दैट टाइप ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट नथिंग बट अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, so that हमको एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलेगा other than just in terms of x और plus c. ऐसा नहीं मिलेगा आपको, ऐसा 20, 30, 40 ऐसा exact value मिलेगा. Okay, so first we'll write notes about this definite integration. You can write in this category of integration, in this category of integration, in this category of integration, we integrate the integrant, we integrate the integrand within specified
limits within specified limits, and the results will be an absolute value. Result will be an absolute value, unlike to the case of indefinite integration, where result varies by a constant. तो हमने हमेशा प्लस सी लिखता था, इधर प्लस सी लिखने का जरूरत नहीं, आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा. सो इधर हमने हमेशा लिमिट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो आप वो भी लिख सकता है. इन डेफिनेट इंटीग्रेशन, What Have you written after value? Will be an absolute value after that. absolute value, unlike to the case of indefinite integration, where the result varies by a constant. So you can write in definite integration, we always specify lower and upper limits. Lower and upper limits of integration. Now we'll discuss how to specify it. Like suppose if you are integrating a term, let's say f dash x dx, and over here we'll put the limit from a to b. जो limit है वो इधर integration में symbol का इधर लिखता है, जो नीचे जो लिखता है which is known as the lower limit, जो ऊपर जो लिखता है which is known as the upper limit. So integration of f dash x dx, तो f dash x को integration करेगा तो हमको क्या मिलेगा, f of x मिलेगा, and we'll say that the limit is going to change from a to b. अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमको हायर लिमिट का वैल्यू पुट करना है, मतलब इंस्टेड ऑफ x b पुट करना है, या माइनस f ऑफ, जो इंस्टेड ऑफ लोअर लिमिट देन a पुट करना है, तो f of b minus f of a will give the value of integration of f dash x dx from a to b. हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा ये क्या चीज है. अभी आप ऐसा ही लिख दो, just write on this one. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. I'll take some example तो आपको पता चलेगा हमने क्या लिखा है. ठीक है? So just write down a question. Integration of x dx from 2 to 3. Integration of x dx from 2 to 3. So पहले आप क्या करना है, नॉर्मल क्वेश्चन जैसा उसको इंटीग्रेशन करना है. तो x dx का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा? X square upon 2. x square divided by 2.
उसके Two. बाद क्या है, Yes, वो sir. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, उसके बाद आप इसका लिमिट पुट करना है. लिमिट इज चेंजिंग फ्रॉम 2 to 3. 2, 3. अभी क्या करना है, फर्स्ट हायर लिमिट पुट करना है. तो इंस्टेड ऑफ x हमने 3 पुट करेगा, 3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करना है 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. सो क्या मिलेगा आंसर, 9 2.5. divided by 2 minus 4 divided by 2, or you can write that is equal to 5 divided by 2. Is it clear? So can you explain this again? Yeah. First हमने नॉर्मल टर्म जैसा उसको इंटीग्रेशन करना है. x raised to 1 का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x raised to 2 by 2. X square upon 2. Yes, sir. Yeah. उसके बाद हमने इसका लिमिट 2 to 3 पुट करना है. तो फर्स्ट ये जो x है उसका जगह पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, Okay. हायर लिमिट. तो 3 raised to 2 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 ऐसे लिखा, माइनस ये हो गया हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट क्या था 2, तो सेकंड केस में 2 पुट किया, 2 raised to 2 x का जगह पे 2 raised to 2 by 2. Okay. Got it? Yes, sir. Understood. Hold on this one. Next question, if it is given that integration of cos x dx and उसका limit है 0 to pi by 2. Pi by 2 means 90 degree. Pi radians 180 degree होता है, तो इसको इंटीग्रेशन करना है 0 से लेके 90 degree तक. तो 90 is upper limit and 0 is lower limit. Try to find out the answer. So that upper limit is pi by 2, right? Pi by 2 means 90 degree. So Pi sin radians. 90 minus sin 0. 0, yes, yeah. उसका वैल्यू क्या है, sin 90 कितना है? Sin 90 तो 1 रहेगा. 1. Sin 0 is 0. 0. 0. तो फाइनल आंसर क्या है? 1 minus 0, 1. 1, yes. तो अब क्या है, नॉर्मल फंक्शन जैसे पहले इसको इंटीग्रेशन करना है. सो cos x का इंटीग्रेशन है which is nothing but sin x. Now we can put the limit changing from 0 to pi divided by 2. So now we can put the value of x. First higher limit put करना है, sin pi by 2 minus sin 0. What is sin 90? Sin 90 is 1 minus what is sin 0 is 0. So we'll get the answer as nothing but 1. Got it? Yes, sir. Yes, sir. I'll take some more examples. Let's say integration of e raised to x dx from 0 to infinity. Integration of e raised to x dx from 0 to infinity. So is the answer 0? So because value of infinity will be 0. इसको इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करो. तो देखो. Sir, e infinity minus e 0. Yeah, e0. Sir, E0 will be 1. e0 will be 1. e raised to infinity क्या होता है? E raised to infinity. E. Infinity होता है. e क्या 2.71 है. 2.71 raised to infinity क्या होता है? Infinity होगा. Infinity minus 1 क्या रहेगा? Infinity. Infinity. So answer is infinity. Infinity, yes. So e raised to x का इंटीग्रेशन करना है, तो आपको मिलेगा e raised to x. And the limit is changing from 0 to infinity. First we can put the higher limit, e raised to infinity minus e raised to 0. Anything raised to e raised to infinity is nothing but 2.71 raised to infinity, which is infinity. Minus anything raised to 0 is 1. So we can write infinity minus 1 is nothing but infinity.
Now take if it is integration of e raised to minus x dx and the limit is changing from 0 to infinity. Try to find out the answer. No, Minus infinity. no. So over here n is equals to minus 1. Infinity. Not n is n. ये exponential function है ना बेटा? अच्छा हाँ. Then infinity. Not infinity. 0. Not 0. So what will be the e raised to minus x. E raised to minus x Integration. का integration क्या होता है? e raised to minus x? e raised to minus x into minus 1 होता है या divided by minus 1 होता है. तो इसका वैल्यू क्या आएगा? Minus e raised to minus x आ जाएगा. And limit is changing from 0 to infinity. अभी देखो बेटा e raised to x का integration e raised to x होता है. हाँ. But e raised to minus x का e raised to minus x नहीं होता है. तो e raised to minus x दिया है. तो हम लोग क्या करना पड़ेगा? We should e raised to minus x dx. So we need to substitute e raised to minus x is equal to t. Got it? So minus x का differentiation होगा minus dx is equal to nothing but dt. dt. So this is the form of integration of e raised to t into dx. dx को आप क्या लिख सकता है? Minus dt लिख सकता है. तभी इसको इंटीग्रेशन कर दो. तो माइनस ऑफ e raised to t का इंटीग्रेशन क्या हो गया? e raised to t. So आंसर क्या आएगा? It is minus of e raised to minus x. Got it? So can you explain how it did it? How you did? बेटा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. अच्छा. तो e raised to x है तो आप e raised to x लिख सकता है. ठीक है? माइनस एक्स के लिए उसको ये किया सब्स्टिट्यूट किया. सब्स्टिट्यूशन किया ऐसे. So e raised to minus x का इंटीग्रेशन minus of e raised to minus x आएगा. Now we can put the limit from 0 to infinity. तो क्या हो जाएगा? ये जो नेगेटिव साइन है e raised to, first we are putting higher limit e raised to minus infinity minus of e raised to 0. अभी बोलो minus of e raised to minus infinity क्या मिलेगा आंसर? सर infinity? No. e raised to minus infinity. No. e raised to minus infinity can be written as 1 divided by e raised to infinity. Yes sir. Minus of e raised to 0 is? E raised to 0 will be 1. 1. Anything raised to 0 is 1. So it is minus of 1 by infinity. e raised to infinity is infinity. So 1 by infinity minus becomes plus 1. What is 1 by infinity? 1 by infinity will be 0. 0. So it is 0 plus 1. So the answer is plus 1. Okay. Sir, बोलो बेटा. sir, how is 1 by infinity 0? Because like suppose if you are having a term 1 divided by 1 कर रहा है, आंसर क्या मिलेगा? 1 मिलेगा. Yes, sir. 1 by 2 कर 1 by 10 कर रहा है तो आंसर क्या मिलेगा? 0.1 मिलेगा. 1 by 100 कर रहा है तो आपको आंसर 0.01 मिलेगा. 1 by 1000 कर रहा है आपको आंसर 0.001 रहेगा. So ऐसा when this term tends to infinity तो this term किधर जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है. Yes, sir. समझा? तो 1 by infinity is 0. उसका उल्टा 1 by 0 is infinity. But sir, in maths we have been taught that 1 by infinity is not equals to 0. It's not exactly equal to 0, but we can say that it's tending to 0. Tending to 0. तो 1 by infinity को आप 0 मान सकता है. आप 0 नहीं बोल सकते. It will be like 0.00000 infinite number of zeros and 1. So it is tending to 0. Okay, so we'll continue in next class. Thank you. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you.